Greetings to everyone watching this video. In today's video, we will be discussing the topic of Mendelian and chromosomal disorders of the chapter Principles of Inheritance in Variation of class 12. But before we move on to the main content, let us know more about us at reWise Me. So reWise Me is an app that makes your exam preparations fun. We have launched Quizathon from this month, that is mega cash prizes, which enables you to get your scores in exams. You can play the quiz in solo mode, you can try randomly with a friend, or you can also play in groups. You just need to download our app and go on and surf the quiz section right away. So let us move on to the main content. हमें सबसे पहले बात करनी है अबाउट द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय द ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल जीन डिफेक्ट है। दूसरा, इट कैन बी ट्रेस्ड बाय पेडिग्री एनालिसिस। It can be traced by pedigree analysis. Pedigree analysis से हम इसको trace कर सकते हैं। Third point, these disorders either may be dominant or they may be recessive. And the next point, if we talk about an X-linked trait, for example, an X chromosome-linked trait, so that shows transmission from carrier female, वो दिखाता है ट्रांसमिशन फ्रॉम अ कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। सो जो भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होगी हमारे पास, एक्स लिंक्ड ट्रेट, वो करियर फीमेल से मेल प्रोजेनी पे जाएगा। अब हमारे पास मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के जो एग्जांपल्स हैं, दे आर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल अनीमिया, phenylketonuria, sickle cell anemia, color blindness, hemophilia, thalassemia, cystic fibrosis, and myotonic dystrophy. So अब फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, हम इस चैप्टर में इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वी विल बी लर्निंग अबाउट हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। सो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वी लर्न अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किस टाइप की डिजीज है? इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। इससे रिलेटेड कुछ डेटा कि इट अकर्स इन 8% ऑफ द मेल्स एंड 0.4% ऑफ द फीमेल्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन लोकेटेड होता है, इसकी वजह से ये मेल्स में ज्यादा होता है और फीमेल्स में कम होता है। नाउ ये हमारे पास कुछ नोटेशंस हैं। व्हेन वी राइट एक्स कैपिटल सी, एक टाइम पे वी राइट एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, और एक टाइम पे वी राइट एक्स कैपिटल सी एंड वाई। सो व्हेन वी राइट एक्स कैपिटल सी and this is small c, I am denoting the small c with a different color. तो जब we write x capital C, that means this is XX, yani this is a girl, and this girl is diseased for color blindness. When we write x capital C and x small c, that means this is a girl because XX, and she is a carrier of the disease. Now when I say she is a carrier of the disease, that means she is heterozygous for the disease. She is apparently unaffected. She is unaffected, but she carries the gene for the disease. And when I write XCY, that means that this is a male who is diseased for color blindness. Up we have a catch, that is a female
can only be colorblind. A female can only be colorblind if there are two conditions for a female to be colorblind. सबसे पहली condition होती है father must be colorblind. Father must be colorblind. That is XCY, and the mother must be a carrier. Mother must be a carrier of the disease. Mother must be a carrier, that means XC, XC. So now when we cross both of this, so we get to see, हमें देखने को मिलता है, that is XC, XC, X capital C, X small c, XCY, and XCY. So here we can see साफ साफ कि the female is diseased for color blindness. Female is diseased. So a female can only be diseased if the father is colorblind and the mother is carrier for a disease. तभी जब cross करेंगे तभी the female can be colorblind. Next up we talk about hemophilia. हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में. तो हीमोफीलिया अगेन इट इज जस्ट लाइक कलर ब्लाइंडनेस, इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. हीमोफीलिया में क्या होता है, अ सिंगल प्रोटीन which is a part of a cascade or a series of proteins that is affected. This single protein is affected, जिसकी वजह से blood clotting problems आ जाती हैं. That is, a single cut will result in non-stop bleeding. एक छोटा सा कट भी it will result in non-stop bleeding. And हमारे जो क्वीन विक्टोरिया हैं, क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री एनालिसिस से पता चला कि उनके जो डिसेंडेंट्स वर हीमोफिलिक. And why were they hemophilic? Because Queen Victoria was a carrier of hemophilia. She was a carrier of hemophilia. Next up, we talk about sickle cell anemia. So when we talk about sickle cell anemia, it is an autosomal recessive disease. So sickle cell anemia, it is an autosomal recessive disease. Now when I say it is an autosomal recessive disease, matlab, it is transferred from the parent to the offspring when the parent are heterozygous, or the parents act as carriers for the disease. So when they act as carriers for the disease, that is, the disease is termed as autosomal recessive. अब हमारे पास कुछ notations हैं. First is HBA, HBS, and HBS. When I write HBA, that means the person is normal. When I write HBS, that means a person is a carrier. And when I write HBS, that means a person is diseased from sickle cell anemia. So HBH is the disease notation for sickle cell anemia. And sickle cell anemia में basically होता क्या है? होता ये है कि there is a substitution of glutamic acid, valine. Where does this substitution happen? This substitution happens at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. तो hemoglobin molecule. So ये बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कोडॉन चेंज होता है. दैट इज दिस GAG चेंजेस टू GUG एट द 6th पोजीशन. 6th पोजीशन पे ये चेंज होता है. अब इस चेंज की वजह से this mutant hemoglobin molecule, it undergoes
पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। सो लो ऑक्सीजन टेंशन में इसका पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें इसका शेप चेंज हो जाता है फ्रॉम अ बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप, अ बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप, this changes into an elongated sickle-like shape. Elongated sickle-like shape. तो बाइकनकेव डिस्क से इसका शेप चेंज हो जाता है टू एन elongated sickle-like shape. Now let us talk about phenylketonuria. So अब जब we talk about phenylketonuria, phenylketonuria is again an autosomal recessive disease. It is an autosomal recessive disease, and phenylketonuria is an inborn error of metabolism. Inborn error of metabolism. अब जिसको phenylketonuria होता है, that person lacks the enzyme phenylalanine hydroxylase. What does this phenylalanine hydroxylase do? It facilitates the conversion of phenylalanine to tyrosine. तो अब ये वाला जो एंजाइम है phenylalanine hydroxylase, ये मिसिंग होता है फ्रॉम द पीपल हु आर इन्फेक्टेड विद phenylketonuria. अब इसकी वजह से this phenylalanine is converted into phenylpyruvic acid and other derivatives. तो ये कन्वर्ट होता है टू फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स. अब बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, और इनका ब्रेन एक्यूमुलेशन में इससे what happens is it causes mental retardation. So this was about phenylketonuria. अब we talk about thalassemia. Thalassemia हमने दो टाइप्स की पढ़नी है. One is alpha thalassemia and the next is beta thalassemia. Alpha thalassemia is concerned with the genes HbA1 and HbA2 on chromosome number 16, and beta thalassemia is concerned with only one gene, a single HBB gene on the chromosome number 11. So chromosome 11 पे beta thalassemia is affected. So the more genes affected, हमें ये पता होना चाहिए कि the more genes affected, lesser are the globin molecules produced. और जो हमारा thalassemia है, thalassemia is again an autosomal recessive disease. It is an autosomal recessive disease. So more the genes affected, less are the globin molecules produced. अब हमें एक differentiation पढ़ना है from thalassemia versus sickle cell anemia. तो हमें ये पता होना चाहिए कि sickle cell anemia is a qualitative problem, while thalassemia is a quantitative problem. क्योंकि इसमें we talk about number in thalassemia, while sickle cell anemia में we talk about the shape, that is the quality of the globin molecule which is being digressed. अब let us talk about chromosomal disorders. So अब when we talk about chromosomal disorders, हमें we need to talk about two terms, that is aneuploidy and one term which is polyploidy. So about aneuploidy and polyploidy. Aneuploidy में सबसे पहले when there is non-segregation of chromatids during cell cycle. So इससे क्या होता है, a condition known as aneuploidy occurs. aneuploidy हो जाती है. लेकिन
फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस यानी साइटोकाइनेसिस का ना होना, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, आफ्टर द टीलोफेज स्टेज। तो टीलोफेज स्टेज के बाद जब साइटोकाइनेसिस नहीं होती, इसकी वजह से क्रोमोसोम्स के सेट में इंक्रीज हो जाता है और इस प्रोसेस को वी कॉल एज polyploidy and polyploidy is commonly seen in plants. So polyploidy is commonly seen in plants. अब हमें तीन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं. They are Down syndrome. The next is Klinefelter syndrome, and the next is Turner's syndrome. तो हमें ये तीन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं. So let us know about them. सबसे पहला हमें जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है दैट इज डाउन्स सिंड्रोम. ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इन बाय लैंगडन डाउन in the year 1866. So Langdon Down ने 1866 में इसको डिस्कवर किया था and this is due to the non-disjunction of the 21st chromosome जिससे अल्टीमेटली क्या होता है ट्राइसोमी ऑफ 21 हो जाता है. अब डाउन सिंड्रोम से होता क्या क्या है, अ पर्सन इन्फ्लेक्टेड विद डाउन सिंड्रोम उसका फ्लैट बैक ऑफ हेड होगा, लूप्स होंगे फिंगर टिप्स पे, पाम क्रीज होगा, इट विल बी सफरिंग फ्रॉम अ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, इट विल हैव अ बिग एंड अ रिंकल्ड टंग विद अ ब्रॉड फ्लैट फेस. अब हमें ये जो कैरियोटाइप दिख रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ कैरियोटाइप? कैरियोटाइप इज अ सेल मैप बेसिकली. सो आप ये देख सकते हो दिस इज 21 और यहाँ पे आप ये तीन क्रोमोसोम्स देख सकते हो. यहाँ पे डिसजंक्शन नहीं हो पाया. सो इस डिसजंक्शन ना होने की वजह से द इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड विद डाउन्स सिंड्रोम. नेक्स्ट अप we talk about the Klinefelter's syndrome. The Klinefelter's syndrome. Klinefelter syndrome, it occurs in men. तो ये Klinefelter syndrome it occurs in men. इसमें जो characteristic है that is 47 chromosomes with an extra X chromosome. It is an extra X chromosome. जिससे क्या होता है that is 47, XXY. So ये X chromosome extra आ गया. So इसके चक्कर में क्या होता है, this X chromosome extra आ गया तो such individuals are sterile. They have an overall feminine growth. They have overall feminine growth, and especially a case of gynecomastia is also occurred. Gynecomastia is seen. Gynecomastia, what is gynecomastia? It is the female breasts growth. So gynecomastia भी दिखता है in the Klinefelter's syndrome with an overall feminine development. Overall feminine development. Next up, we talk about the last syndrome that is the Turner's syndrome. So Turner's syndrome जो होता है, it occurs in women. Turner syndrome occurs in women, and what exactly happens in the Turner syndrome is there is lack of an X chromosome. Lack of an X chromosome, जिसकी वजह से there are 45 chromosomes with a karyotype of XO. 45 chromosomes with a karyotype of XO. So instead of XX there is XO क्योंकि 0. What exactly is O? This indicates the lack of an X chromosome. अब females inflicted with the Turner syndrome, these females are sterile. These females are sterile. These females are sterile and they have lack of secondary sexual female characteristics. Lack of secondary sexual female characteristics. So I really hope you understood the concept of Mendelian and chromosomal disorders. I would now like you to go on our quiz and attempt I would now like you to go on our app and attempt the quiz pertaining to this section to test the knowledge you have just gained. Thank you and have a nice day.